go on to the next part, that is Venn diagrams of level 3. Now, why do we call them level 3 Venn diagrams? Again, the same reason is there'll be three categories of people who come together. Okay, or there'll be a combination of three groups coming together. Okay, so let's understand them with the help of a question. During a survey of 90 people for finding out their musical genre preferences between rock, metal, and jazz, it was found that 66 people like rock, 55 people like metal, and 52 people like jazz. Okay, 40 people like both rock and metal, 32 like metal and jazz, and 36 like rock and jazz. 22 people like all three. Find how many liked. Okay, then we have the questions. Okay, now this is one of the most informative, जहाँ सबसे सारा information दिया हुआ है. Okay, this is one of the most informative Venn diagram questions you can come across, and very simple to solve also. We'll see how. So guys, यहाँ what we have is we have two circles. Okay, अगर suppose सिर्फ दो genre होता है यहाँ पे, suppose metal and rock, तो हम लोग क्या करते हैं, दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं. बट यहाँ पे एक और तीसरा सर्कल भी आएगा, राइट, which will be common to, which may be common to both of them, right? So it will be an arrangement like this. Okay, so this is what we have for a level 3 Venn diagram, three circles coming together. Okay, now total number of people is 90. So this rectangle के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 90 लिख दिया. That is the total value of the number of people we have. Okay, now between these people, exactly 66 people like rock. Okay, denoted by R here in the diagram. You can see it flashing on the screen right now. 55 people like metal and 52 like jazz. Okay, 40 people like both rock and metal. So between rock and metal, this is the common region which we have, right? Rock and metal, right? So ये 40 हो जाएगा. Okay, now guys, majority of the people do this mistake. Okay, just because the question says 40 people like both rock and metal does not mean 40 यहाँ पे आएगा. Okay, because these 40 people also include the people who like all the three. Are you understanding this? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि 22 people like all three genres, right? So the place where all the three circles meet is the place where the people like or prefer all three genres, right? So ये है intersection of these three circles. So हमेशा जब भी इस question में और these questions में people who prefer these three or people who prefer all three categories होगा, it will be this intersection of these three circles, right? So this value is given as 22 in the question. Now 40 people like both rock and metal. उसमें से 22 people ऐसे हैं जो like those who like all three. So how many like only rock and metal? These two categories. The answer is 40 minus 22, which is nothing but 18, right? Similarly, people who like metal and jazz, कितना है? 32. So how many people like only metal and jazz? 32 minus 22, which is 10. And people who like rock and jazz, again, कितना हो जाएगा? 36 minus 22, 14, right? Now, if you look at the people who prefer rock, okay, rock music, okay, there are 66 people. Okay, उसमें से देखो 18, 22 and 14, these three values we already know, right? So what is this number of people who prefer only rock music? This will be found by difference of 66 from these remaining values, right? So 66 में से क्या करेंगे हम लोग guys, ये तीन values subtract कर देंगे. 18, 22 and 14, ये हो जाएगा 54, sorry, difference is 12. Okay, same way people who prefer metal music कितना है? 55. Okay, उसमें से ये तीन वैल्यू हमें दी हुई है, right? 18, 22 and 10. This comes out to be 50. So how many prefer only metal music? 5. Same way, right? 52 people prefer jazz, and उसमें से exactly 14, 22, 10 दिया हुआ है हमें. Subtract करेंगे 52 में से इन तीनों को, we get 6, right? 52 में से ये तीन subtract करेंगे. 36 and then 46 will be 6, right? Okay. Now, guys, next thing is to find out how many people prefer none of these three. Guys, next step is to find out the people who don't like any genre. Okay, now उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? See, we have to find out the people who prefer at least one genre. At least one मतलब क्या, कम से कम एक. उसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, ये सारे वैल्यूज को ऐड करते हैं. ओके, एंड देन 90 में से ये वैल्यूज को जो सम आएगा उसको सबट्रैक्ट करते हैं, राइट? आई टेल यू क्विक शॉर्टकट. सी, आपको सारे वैल्यूज ऐड करने की जरूरत नहीं है. व्हाई? कोई भी एक सर्कल ले लो. ये पूरा सर्कल कितना है? ये पूरा सर्कल है 66. ओके, उसमें बचे कितने? बचे ये तीन, राइट? 1, 2, 3. सो द पीपल हु प्रेफर एटलीस्ट वन जॉनरा मींस एग्जैक्टली वन वाले ये लोग, ओके, एग्जैक्टली टू वाले ये लोग, और एग्जैक्टली ऑल थ्री वाले ये लोग. ओके, इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 66 प्लस दीज थ्री वैल्यूज, राइट? वेरी सिंपल. ओके, सो 66 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 71 एंड देन उसके बाद दिस विल बी 10. 81 plus 6, 87, right? So 87 people prefer at least one genre. 90 people we have. So how many people prefer none? 90 minus 87, which is 3. Okay. So remember, the people who prefer at least one genre, the answer was 87. क्या किया हमने? 66 plus 5, 10, 6 को add कर दिया, right? Okay. Let's look at the questions now, guys. Oh, पहला question यही है. At least one genre. Okay. What you did? You just take 66, and उसमें हमने क्या add किया? 5, 10, 6 add किया, right? The answer is 87, right?
Okay guys, so let's go on to the next question. At least two genres. Okay, at least two के लिए हम क्या करेंगे guys? कम से कम दो, मतलब दो genre या उनसे ज्यादा prefer करने वाले, right? So 18, 14 and 10 plus 22. Okay, add all these values. Okay, so 18 and 22 is 40 plus 14, 54 plus 10, 64, right? Okay, exactly one में कौन कौन से आएंगे guys? Only these values which are not common to any of them. Okay, so 80 of 12 plus 6 plus 5, 18 plus 5, 23 is the required answer in this case. Next question. At most one genre, at least one, at most one मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा one. तो वो हम कैसे निकालेंगे guys? Exactly one वाले में हम लोग क्या ऐड करेंगे? None वाले ऐड करेंगे, right? So when you add 3 to 26, you get 23, you get the answer 26, right? नेक्स्ट क्वेश्चन. एट मोस्ट टू जॉनर्स. एट मोस्ट टू मतलब क्या गाइस? ज्यादा से ज्यादा दो. ओके, मतलब इधर जीरो और वन और टू. तो आप लोग क्या कर सकते हो? यू कैन ऐड थ्री, ओके, विद 6, 12 एंड 5 एंड 18, 14 एंड 10. ओके, और एक सिंपल शॉर्टकट ये है, टोटल 90 लोग हैं, उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ये लोग जो एग्जैक्टली तीन जॉनर प्रेफर करते हैं, राइट? आंसर इज 68. एज सिंपल एज दैट. Let's go on to the next question, guys. None of the three, we got the answer as three. For IB, okay. Okay. Okay, guys. So next part देखते हैं इसका. We'll see one more method to solve these questions. Okay, at least one genre वाले. So guys, when they're asking you, find out how many like at least one. Okay, at least one मतलब क्या? Okay, one या फिर two या फिर three. मतलब total none को छोड़ के ये सारे values का हमें sum चाहिए. These values where people prefer exactly one genre. Okay, these where people prefer exactly two, and this where people prefer exactly all three. Okay, in सबका हमें sum चाहिए, right? Okay, so at least one genre के लिए they're asking you number of elements in R union M union J. Okay, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे guys? पहले R, M और J तीनों को ऐड करेंगे. Number of elements of R, then M and then J. Okay, but we observe that guys, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है इन दोनों में, ये R और M दोनों में आ गया है. सिमिलरली ये वाला पार्ट जो है गाइस, ओके, दिस वन, ओके, हाईलाइटेड हियर, ये वाला पार्ट आर और जे दोनों में आ गया है, राइट? सिमिलरली ये वाला पार्ट जो है, दिस वन हियर, ओके, ये वाला जे और एम इन दोनों में आ गया है, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम उसको एग्जैक्टली एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? बिकॉज वो दो बार काउंट हुआ है ना, हमें उसको इंक्लूड करना है, लेकिन वो दो बार काउंट हो गया, राइट? सो वी सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इंटरसेक्शन एम, एम इंटरसेक्शन जे एंड आर इंटरसेक्शन जे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, अब गाइस ये करते करते हमने ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट जो तीनों में कॉमन है, वो तो कंप्लीटली निकाल ही दिया, राइट? ओके, सो वी जस्ट एडेड एग्जैक्टली वन मोर टाइम. Okay, and number of elements in R intersection M intersection J that we add exactly once to make sure कि हाँ ये एक बार तो आ ही रहा है, right? Okay, so with that we go on to the question here. So number of elements of R union M union J क्या हो जाएगा यहाँ पे? Number of elements of R plus M plus J ये हो जाएगा 66 plus 55 plus 52. R intersection M, M intersection J, R intersection J, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 minus 40 minus 32, these values. Okay, and तीनों का intersection is this. When you solve this, you get the same answer, 87. As simple as that. Okay, so you can remember this as a shortcut. Shortcut तो नहीं बोल सकते, it's not a very short method. But yes, you can remember this relation here. Number of elements of A union B union C is number of elements of A plus B plus C minus number of elements of A intersection B minus number of elements of B intersection C minus number of elements of A intersection C plus number of elements of A intersection B intersection C, all three combined. Okay,